Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा and I am back with some practice exercise for the Word Association test, which is one of the psychological tests for your upcoming SSB interview. आपको पता है SSB interview में 4 psychological test होते हैं, टैट, वैट, एसआरटी और एसटीटी। और वैट यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सेकंड साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपको स्क्रीन में वर्ड्स दिखाए जाते हैं और हर एक वर्ड के लिए आपको एक एक सेंटेंस लिखना पड़ता है। यहाँ हम कुछ वर्ड्स जो है आज के प्रैक्टिस एक्सरसाइज पार्ट 11 में हम कुछ वर्ड्स जो है वहां यहाँ डिस्कस करेंगे और इन वर्ड्स के लिए किस तरह के सेंटेंस लिखा जा सकता है, इसके लिए मैं आपको कुछ सैंपल रिस्पॉन्सेस, सैंपल सेंटेंसेस भी शो करूंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि उन सेंटेंसेस को लिखने के बाद किस तरह साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर के क्वालिटीज को उन सेंटेंसेस से असेस कर सकते हैं। नाउ द सैंपल रिस्पॉन्सेस दैट आई एम गोइंग टू शो यू आर ओनली सैंपल सेंटेंसेस, दे आर नॉट टू बी कॉपीड और मेमोराइज। तो आप अपने अनुसार अपने हिसाब से सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको रेफरेंस देने के लिए ये सैंपल रिस्पॉन्सेस आज के सेशन में मैं शो करने जा रही हूँ। आई विल नॉट टेल यू टू कॉपी पेस्ट इट और मेमोराइज इट एंड देन कॉपी पेस्ट इट ड्यूरिंग योर SSB interview, right? In the VAT test. So the first word that we are going to start with in today's session is easy. देखते हैं इस वर्ड को लेके क्या सेंटेंसेस लिख सकते हैं। मैं हर वर्ड के लिए एटलीस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस शो करूंगी ताकि आपको वैलिड आइडियाज हो सके और उन सेंटेंसेस से किस तरह के क्वालिटीज असेस किया जा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इजी से आप लिख सकते हो, लीडर एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इन एन इजी एंड अग्रीएबल मैनर टू अदर्स। इससे आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन शो करेगा। डिटर्मिनेशन मेक्स इट इजियर टू अचीव अ गोल, ये शो करेगा दैट यू आर अ डिटरमाइंड पर्सन। देयर इज नो इजी सोल्यूशन और शॉर्टकट्स टू अचीव अ गोल, ये शो करेगा दैट यू are a hardworking person. Next word है ahead. Ahead के लिए आप लिख सकते हैं India's nuclear program is ahead in time with its rival countries. It shows that you are knowledgeable and that you are an ideal citizen of the country. Paying attention on the road ahead while driving can reduce road accidents. It shows you are a responsible person. And you're also you are not problem oriented, you're solution oriented. Problem ahead us is tackled by knowing it. It also shows your problem solving qualities. Next word is sacrifice. इसके लिए आप लिख सकते हो working hard doesn't mean sacrificing your social life. It shows that you are a balanced person and you are also able to balance or manage time as well as your work life balance. 7 soldiers sacrificed their lives for the country in Pathankot terrorist attacks. It shows that you are well aware of current affairs and all. After many sacrifices, he joined the coaching center फाइनली। तो ये ऐसे जनरल सेंटेंसेस लिखने की जगह जैसे ही शी से आप अपने अनुसार अपना, अगर आपने ऐसा कुछ किया है खुद से तो अपना एक्सपीरियंस से भी आप लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पी, वेरी इजी वर्ड। इसे आप लिख सकते हो आई हैव अ हैप्पी नैक ऑफ मेकिंग पीपल like me. Social adaptability show करेगा। Happy people are positive and attractive. It shows your optimistic qualities. We were happy for the growing impact of Make in India program in foreign countries. It shows that you are aware of current affairs and you support the schemes or the different progress that the government is making. The next word is discussion. इसके लिए आप लिख सकते हैं the quality of group discussion teaches one to work in a team. It shows that you are a team player. India discussed the Pathankot matter with Pakistan to solve the issue ASAP. It shows that you are up to date with current affairs. Discussions about environmental improvement programs were recently concluded in Paris. It again shows that you are not only aware of the current affairs regarding India, but also international affairs as well. Next word is satisfaction, और इससे आप लिख सकते हैं the bank charges the people with interest to satisfy their loans. That you are knowledgeable, आपकी practical knowledge show कर रही है. Satisfactory results can be achieved by preparing and working hard towards it. It shows how you work to achieve a goal. It's good that social services are trying to satisfy the needs of so many different groups. In India, it shows that you're a socially adaptable person and that at some point, maybe you are also a person who wants to help the others in the society. The next word is encourage. इसके लिए आप लिख सकते हैं parents should encourage their children to join the NCC. It shows that how you are inclined towards NCC and how you think that the children in India should start their basic training from a very early childhood and how parents should encourage that. Defense aspirants are encouraged by the soldiers' sacrifices to join the armed force. It shows your passion, your aspiration, or your, I would say, your role model, your inspiration. The results have been encouraging enough for trying hard next. It shows how you're resourceful. Next is system.
और इससे आप लिख सकते हैं इंडिया इज डेवलपिंग अ वर्ल्ड क्लास रेलवे सिस्टम, नॉलेजेबल नेचर शो कर रही है आपका. डूइंग वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट्स, इट शो दैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, यू आर प्रोफिशिएंट. The computer system used in the defense equipment is of world class. It shows your efficiency level. Next is quick, or इससे आप लिख सकते हैं reading instructions makes our tasks quick. It shows that how you, according to you, following instructions is a what should I say? It's a very clever trick to do the work properly. It was quick of me to spot the mistake. It shows that your quickness or speed of decision making, quickness of decision was demonstrated by us. It again shows the same quality. The next word is comfort, or इसके लिए आप लिख सकते हैं a few words of comfort are enough to make peace than to create a war. It shows your non-violent nature, that you're a peace-loving person. I make a comfortable earning to meet my expenses, shows you're self-reliant and independent. People with depression need time and comfort. It shows that you have the ability or you have the knowledge to deal with mental health issues. Okay. The next is judge, और इससे आप लिख सकते हैं the judge of the high court ruled in favor of women equality. Current affairs शो करेगा ये, और अगर आप कोई specific case या event यहाँ पे mention करना चाहते हैं that would be better. Deciding my career was a very judgmental decision, so decision making ability शो कर रहा है ये आपका. Judging someone based on their appearance is not a good quality. It shows that you do not judge people by their appearance. Okay. The next word is women. So इससे आप लिख सकते हैं women are an adorable gift of mankind. So it shows your admiration for women, your knowledge, your mindset for women. Okay. Respecting a woman makes for a true gentleman. It shows you gentlemanly etiquette. Men and women are equal in all aspects of life, most even leaving men behind. It shows that you are in support of equality of gender, or be more specific, women empowerment. The next word is desire, or इससे आप लिख सकते हैं strong desire to achieve something will work out with good preparation. So it shows that not only a strong desire is necessary, you have to have a good mindset to prepare well for it. So it shows how you prepare for achieving a goal. It is desirable to exercise some social control over technology. It shows that you're a responsible person. He desired to undertake the responsibility to make his society clean and green. तो अगर आपने ये किया है तो थोड़ा specific आपको यहाँ पे mention करना है to show that how you are having the sense of responsibility. The next word is bold, और इससे आप लिख सकते हैं bold attempt was made by the Delhi government to control pollution. Again आपका current affairs knowledge show कर रही है. Bold look in a person makes him seem more confident. It shows you are a confident person and how you project yourself to show your confidence level. Important instructions were marked in bold in SSB call letter. It shows your general observation skills. Next is brave, और इसके लिए आप लिख सकते हैं we were brave during the tough times in college days. You can also talk about COVID or any disastrous things that you have faced. So it shows that how you keep the hopes high even in bad times. Braving challenges keeps us strong. It shows that challenges you love to fight challenges because that makes you strong. Okay, so आपका courage show करेगा ये. Captain Vikram Batra was a brave warrior. It shows your inspiration and your role model if he's a role model. Next is defeat, और इससे आप लिख सकते हैं accepting defeat is the best quality of a successful person. It shows your humility. Knowing the problems makes defeating it easier. It shows how you prepare. If you want to win in somewhere, how you prepare to fight your opponent. इंडिया डिफीटेड श्रीलंका टू लिफ्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो अब यहाँ पे कोई रीसेंट जैसे आईपीएल वगैरह कोई भी मैच या कोई भी टूर्नामेंट वगैरह जो भी हुआ है उसमें अगर इंडिया ने किसी देश को हराया है या कहीं पे किसी टीम ने हराया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज डेंजर, नेगेटिव वर्ड. तो इसे आप लिख सकते हैं इंडियन गरुड़ कमांडोज वर रेडी फॉर द डेंजरस सिचुएशंस इन पठानकोट. आपका करंट अफेयर शो कर रही है. Signs of danger can be tackled by having its knowledge. It shows how you should prepare or how one should prepare about danger. Lieutenant Colonel E.K. Niranjan put his life in danger to save fellow soldiers. It again shows your passion towards the forces. Next is craze. So craze से crazy और या फिर कोई और form of words भी craze से लिख सकते हैं. तो craze से देखते क्या लिख सकते हैं. Joining armed forces is a craze among defense aspirants. It shows that it's also same for you. Genius people are sometimes thought to be crazy by the society. You can see crazy word is used. Not bowing to others' opinions. That is what is shown of you. I go crazy for outdoor adventures. It shows that you are an adventurous person. The next word is risk. Risk से आप लिख सकते हैं. Though there was a risk of life, the NSG didn't back for the mission. Shows your current affairs knowledge. Risk of heart attacks can be reduced by eating healthy food.
It shows that you're aware of it, health conscious. Project finance is essentially an exercise in risk management. So it shows again your knowledge in that. Next is peace, और इसे आप लिख सकते हैं. Optimists believe in peace than favoring a war. It shows that you are a peace-loving person. Peace of mind is achieved by completing everything within the assigned time. It shows that how you complete your own task within deadline. India held peace talks with foreign countries this year. So it shows that how India is also a peace-loving country and how you support that or you are knowledgeable about it. तो ये थे कुछ आज के वर्ड्स और उनके कुछ सैम्पल रिस्पॉन्सेज सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है और हर एक सेंटेंस के लिए मैंने ये भी बताया है कि किस तरह की क्वालिटीज असेस किया जाएगा अगर आप ये सेंटेंसेस उस वर्ड के लिए लिख सकते हैं. Now I will give you 5 words for your homework and I would request you to write one sentence for each of these words in the comment box below. So for your homework, the words are dress, ornament, bag, glass and watch. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी नीचे कमेंट बॉक्स पे आप एक एक सेंटेंस इस वर्ड के लिए लिखिए. एंड अगर आप ऐसे ही अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में 5 दिन प्रोसेस के बारे में फुल जानकारी मिलेगी, प्रैक्टिस करने को मिलेगा आपको. सिर्फ यही नहीं, आप हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. लेट मी ऑल्सो अनाउंस यू दैट फॉर द जून बैच, हमारे जो जून बैच का लाइव क्लास है वो 3 जून से स्टार्ट होने जा रहा है. तो इसको ज्वाइन करने के लिए आज ही आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है. इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे. सो डाउनलोड our app today, use the code warrior10 to get yourself 10% off on any of these courses. I'll see you next with part 12 of the VAT practice exercise where I'm going to bring some more VAT words and some sample sentences for those words for you. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.